see yourself as a CM face, sir? I can't say anything right now because I don't know what the future holds. My first priority is to get past the halfway mark, to get a mandate, and then who knows what the future has. It is the Rajasthan government that issues a letter, an official letter, which says that there will be no electricity shortage of supply because so and so community is having a festival. When a government offers a letter, issues a letter like this, it is appeasement. When Congress government says we are offering pattas, we are offering land to all the Maulvis, it is appeasement. Tracking one of the most complex of campaigns from Tonk to Jodhwara to now entering the Shekhawati region. जहां इस बार आने वाले 25 नवंबर मतदान के दिन कमल निशान पर जमकर मतदान करें। पानी बिजली तो आ रहा है, पानी बिल का तो महंगा आ रहा है तो भाई जी दीदी बिल भी तो महंगा आ रहा है, थोड़ा करो सर सरकार की सुविधा, कराओ सरकार की सुविधा। कांग्रेस को वोट, गवर्नमेंट की है बिल, मतलब बिल का 1 रुपये नहीं आता है और जो उनकी चिरंजीवी योजना से मतलब किसी का नहीं लगता है, मतलब कोई भी इलाज मुफ्त है और जो राशन किट है वो मिल रही है अच्छे से। बीजेपी कांग्रेस की कोई भी सरकार हो, पेपर लीक का तो मामला चलता ही है, पेपर लीक तो बीजेपी सरकार में भी हुए हैं। The Shekhawati belt comprises of Sikar, Jhunjhunu and Churu districts. Was a Congress citadel before the BJP made inroads in 2013. 2018, the Congress swept it again. The 3 districts comprise 21 seats of the 200 assembly seats in Rajasthan. This region shares its borders with Haryana. Shekhawati is the cradle of Jat politics. With a voting population of 12 to 13%, much more than Rajputs, upper castes, Gujars or Meenas. It is here that once again brews the dream of a Jat chief minister. 52 के चुनाव से कोशिश कर रहे हैं कि जाट किसान सीएम बने, लेकिन आज तक तो बना नहीं। अब की बार देख रहे थे कि किसान बन जाए तो ठीक है कि जाट सीएम बने। हाँ, जाट सीएम क्यों चाहते हैं? जाट है, जाट और किसान एक ही है। With its stunning Havelis, its pretty frescoes, the Shekhawati region of the state of Rajasthan is a visual treat. It's like an open museum of sorts. Politically, it's a hotbed of politics, the cradle of the Jat vote. Traditionally speaking, the 21 seats in the Shekhawati region spread across 3 districts decides the fate of the Rajasthan state. Every election, the vote here has flipped in line with the state trend. कब से बना रहे हो लाकर? 50 साल हो गए। 50 साल से? 20 साल के बनाने लगी और अभी 70 साल के हो गए। 70 साल के हो गए। किसने सिखाया था? मेरी माँ ने सिखाया। माँ ने सिखाया है। दुकान ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रही है, गुजारा दाल रोटी मिल जाता है, गुजारा हो रहा है। लोग ज्यादा खरीदते हैं या कम? कभी ज्यादा खरीद ले, बात हुआ ज्यादा हो जाए, नहीं है 2-4 थोड़ा बिक जाए। मैं ना 2018 में आई थी, ये लेके गई थी यहाँ से। हाँ ले गया सुबह। ये वाला? हाँ लेके गया, सही। ये वाला बनाया था तब आपने यहाँ पे साथ में बैठ के बनाया था? हाँ सही। तब बनाया था। वोट डालते हो? वोट डाला मैं। अभी भी डालते हो? क्या सोच के वोट डालते हो? कि मैं निशान लगा दूँ, मेरी मर्जी अभी पर निशान लगाया हूँ। जो मर्जी हो उस पे निशान लगाया। मन का करते हो या ये बताए या कोई और बताए? कोई बात नहीं है, अपनी मन की करा। अपनी मन की करते हो? अपना दिल दापा बिन देवा, जिसको दिल करे उसको जाके दो। सुथरा कौन लगता है? बढ़िया। बढ़िया कौन है? सब बढ़िया लगता है। नहीं सब बढ़िया, पर क्या मतलब? सब बढ़िया ही, अपन लिए तू करे तो हाथ को नहीं। नहीं मुद्दा क्या रहता है कि मेरे को ये चीजें जो करे मुझे अच्छा लगता है,
Certainly she told me it's Congress हाथ, पर हाथ क्यों पसंद? कांग्रेस है. Rajasthan Congress chief G.S. Dotasra is locked in a battle of survival in his Lakshmangarh constituency. Though he is a 3-time MLA from here, Dotasra facing a tough time against Subhash Maharia, a Congress rebel who joined the BJP recently. इस क्षेत्र की का कल्चर, इतिहास और राजनीति कैसे देखते हैं? इस क्षेत्र का इतिहास तो राजाओं का था पहले, राजा रजवाड़े जो थे उस समय तो उनका था, लेकिन उस समय भी कुछ इस तरह के अत्याचार हुए लोगों पर, और अत्याचार की वजह से लोगों में जागरूकता आई, और जागरूकता के कारण यहाँ पर, जैसे हम अगर स्वतंत्रता के इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में और जगह स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया, यहाँ पर 2 मोर्चों पर लड़ा गया। वो एक अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरा यहाँ के जो शासक थे जिन्होंने तरह तरह के लगाम वगैरह लगा रखी थी लोगों पर, उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी उनको। इस तरह से यहाँ अक्सर ये लोग कहते हैं कि यहाँ का जो स्वतंत्रता अभियान आंदोलन था वो 2 मोर्चों पर लड़ा गया। यहाँ पे जो आपने कल्चर की बात की, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? अगर लोगों की बात करे जाए, मतलब मेंटली कैसे हैं, कैसा यहाँ का वोटर बता दीजिए, वोटर का क्या मिजाज रहता है? ना, वोटर का मिजाज देखिए, ये जो शेखावाटी बेल्ट है राजस्थान का, ये जाट बहुल इलाका इसको कहते हैं, और क्योंकि जाट जो कम्युनिटी है वो वोकल है, और उस वजह से इस इलाके में वो उनका रुझान जिस तरफ होता है वो एक माहौल बनाने में बहुत काम आता है, और उसी पार्टी का एक माहौल यहाँ तैयार होता है। और दूसरी तरफ हालांकि जागरूकता खूब है, अच्छी जागरूकता है, राजनीतिक जागरूकता खूब है, लेकिन परंपरागत रूप से अगर हम इस क्षेत्र का स्टडी करें, 1952 जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उस हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति झुकाव रहा है इस एरिया का। पर 2013 में तो भाजपा ने ले लिया था। उसके बाद में जब जैसे 2014 में सेंटर में मोदी जी की सरकार आई, फिर यहाँ भी भैरव सिंह जी की जब सरकार बनी थी राजस्थान में, तब से थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन फिर भी जो है परंपरागत रूप से ये सीट जो है कांग्रेस की रही है, ये पूरा जो रीजन है क्षेत्र से शेखावाटी। तो 2013 में भाजपा आई, फिर यहाँ पर 2018 में फिर कांग्रेस ने वापस ले लिया। ये राजस्थान का ट्रेंड है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो शेखावती की 21 सीट लेता है, जो ज्यादा लेता है, उसी की सरकार बनती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये जरूर है कि शेखावाटी में अगर आपको बीजेपी को 50% सीट भी मिल गई, इसका मतलब बीजेपी स्टेट में जो अच्छा कर रही है। यहाँ पे देखा जाता है। पिछले चुनाव की बताऊं मैं आपको, 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें सीकर जिला, शेखावाटी का एक प्रमुख जिला है सीकर जिला, उसमें 8 सीटें हैं, 8 में से एक भी बीजेपी को नहीं आई थी। तो ये बीजेपी के लिए टेस्ट ग्राउंड है कि अगर बीजेपी बढ़िया करे बिल्कुल तो मतलब सरकार बनने जा रही है। अच्छा, दूसरी बात जो एक नई चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है वो ये है कि हमारे शेखावाटी बेल्ट में हम 2 सीट जो है ऐसी है जिसको हम हॉट सीट मानते हैं। एक हमारा लक्ष्मणगढ़ जहाँ से पीसीसी के चीफ चुनाव लड़ रहे हैं, जी, दोतासरा। एक नवलगढ़, डॉक्टर राजकुमार शर्मा प्रत्याशी है कांग्रेस के। इन दोनों की स्थिति है पिछले 3 चुनावों से देख लीजिए, 2013 में, 2008 में, 13 में और 18 में, तीनों चुनावों में उन्होंने एक तरह से वन साइडेड जो अपनी जीत है वो दर्ज कराई है, और इस बार भी वो स्थिति थी। इस बार आपको क्या लग रहा है? लेकिन इस बार अगर इन दोनों सीटों पर वो अगर मुकाबले में फंसे हुए हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आपको लग रहा है सीटें फंसी हुई हैं? सीटें फंसी हुई है, लक्ष्मणगढ़ की फंसी हुई है और नवलगढ़ की फंसी हुई है। कह नहीं सकते कौन जी जीत जाएंगे या सुभाष महरिया जीतेंगे। तो आपको लग रहा है अगर यहाँ पे फंसा हुआ तो मतलब मामला फंसा हुआ है। बस आखिरी सवाल करूंगी, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी हवा है? किसकी हवा है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि अगर ये 2 सीट फंसी हुई है तो टक्कर है, तो थोड़ा सा
अब की बार आपको लगता है हिस्ट्री फिर दोहराएगी? हो सकता है, हो सकता है, इस बार हो सकता है बिल्कुल। Lakshmangarh and Sikar. This was also the hotbed of farm protests in 2019-2020. And then again, the protests against Centre's Agniveer scheme. It's often said that every household from the Shekhawati region promises a soldier to the Indian Army. We speak to the ex-servicemen here. आप ये जो पूरा शेखावटी की जो राजनीति है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर तो हम लोग तो वैसे फौजी आदमी हैं तो इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन फिर भी राजनीति तो देखिए, अभी कभी कोई सी गवर्नमेंट काम कर जाती है। यहाँ पर तो राजस्थान के अंदर एक दफे बीजेपी आती है, एक दफे कांग्रेस आती है। देसी भाषा के अंदर इसको बोलते हैं उत्तर बिंखा मेरी बारी। तो क्या फिर से बोलिए? उत्तर बिंखा मेरी बारी, मतलब इस बार मेरी बारी? इस बार मेरी बारी है। अभी तक तुम सड़ ली आप, तो उस टाइप की मतलब जो वो इस बार लग रहा है, इस बार इस बार भी लग रहा है उत्तर बिंखा मेरी बारी। उत्तर बिंखा मेरी बारी, ये तो परिपाटी चली आ रही है, इसमें लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। परिपाटी है तो एक हर 5 साल बाद में चेंज होती है, तो सत्ता तो उसी टाइप से है। बेशक चाहे वोट चाहे हमारा कहीं भी दे, लेकिन जो पर वोट देते हैं पब्लिक परसेप्शन जो बना हुआ है वो तो यही बना हुआ है कि भाई चेंज होगी। कैप्टन साहब, यहाँ पे शेखावती में और जो आर्मी का लिंक है क्या है? शेखावटी का लिंक बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है लगभग शेखावटी से काफी, यानी शेखावटी का मतलब सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और अपना चूरू, इन तीनों जिलों से आर्मी के अंदर बहुत हैं। और अभी तो ये समझा जाए कि मतलब हर घर से लगभग एक कैंडिडेट तो जरूर मिल जाएंगे जो आर्मी से। 3 भाई हैं। आप 3 भाई आर्मी से रिटायर हैं तीनों? हाँ, 71 ऑपरेशन भी मैंने देखा है, 65 भी देखा है। मेरे से छोटे वाला है वो 71 में प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहा पाकिस्तान के साथ, और मैं खुद जख्मी भी हुआ। तो आप खुद जख्मी? बांग्लादेश को हमने अलग करने में भारत का पूरा झंडा उसमें आपका हाथ? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या पहले तो जो काफी, क्योंकि यहाँ से इतने सारे सैनिक निकलते हैं, अग्निवीर क्या कोई इसमें मुद्दा है या नहीं है? अग्निवीर सक्सेस नहीं होगा। क्यों लग रहा है? इसलिए कि मैंने सुना था कि कभी मोदी जी ने कहा था कि न रैंक रहेगी न पेंशन, वो मोदी जी ने कर दिखाया। अब वो कब तक सक्सेस होता है वो उनके ऊपर निर्भर है। हालांकि वो देश के बहुत ही बड़े एक पोस्ट पर हैं और देश के मालिक भी हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। हम तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। उनको देश की लगी हुई है, हमें इंडिविजुअल लगी हुई है। अग्निवीर है न, इसको हम क्यों मन लड़ाइयाँ लड़ी। हम तीनों भाई आर्मी में थे, मरने को सभी मरते हैं 2 गज कफन के वास्ते, और मरना उन्हीं का जो मरते हैं इस वतन के वास्ते। मैं कायम खानी कास्ट से ये विलोम करता हूँ। और अभी कल ही हम एक झुंझुनू के अंदर वीरगनाओं को सम्मान करके आए, और पूरी कंपनी, मुझे गर्व है कि मुझे खुदा ने पैदा किया, आर्मी इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और इस कौम में पैदा हुआ। आपको सर ये बताना मैडम साहब कि एक कंपनी की नफरी हमारी सिर्फ 120 होती है ओनली। उसके अंदर 5 वीर चक्र, 1 सेना मेडल मौजूद है अभी। वो एक इतिहास है हमारा। आपको लगता है कि जो रिस्पेक्ट है, जो ड्यू है, वो दिया गया है एक सर्विसमैन को? रिस्पेक्ट सर ऐसा है कि पहले था ना जो पुराने जमाने में, वो उसमें थोड़ा अंतर हो गया। अभी पहले जब एक रिटायर को प्रॉब्लम होती थी तो गांव वाले सब बक्के पूछते थे क्यों वो ड्यूटी पर है, फील्ड में है वो, और अधिकारी पूछते थे कि इसके घर में कोई परेशानी है तो आगे है। लेकिन वो वैसा नहीं है अभी इस टाइम। अब वैसा नहीं, ऐसा फर्क पड़ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों से खुश हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं सर, ये अग्निवीर बताया नहीं। हाँ, वो बताया। ये से हम खुश नहीं है, क्यों हम लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए हमारा नॉलेज है, और तो नहीं है, लेकिन वो नॉलेज है। हाँ, वो ठीक नहीं। वो भी दूसरा जो वहाँ इन्फेंट्री के अंदर कास्ट वाइज करते हैं जी, वो गलत है। वो जरूरी है, जरूरी है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी। हमने लड़ाइयाँ लड़ी क्योंकि मिक्स नहीं, फर्क होता है। वो कास्ट लड़ती है, वो रिलेटिव होता है, वो उसका गांव का होता है, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। हमारे इन्फेंट्री का ये काम है। आज तक तो ये था, अभी पता नहीं मिक्स कर रहे हैं। Deeper into the Jat belt, in a state deeply entrenched on caste lines, the demand echoes. The kingmakers want to be king this time. Chief ministership.
यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीति तो बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, बस यही चलता आ रहा है। हाँ, यही कभी कभी इस क्षेत्र में मार्क्सवादी भी आते हैं, मार्क्सवादी भी आते हैं, सही बात करें। जो आपका जो गांव है वो जाट बहुल गांव है? हाँ, जाट बहुल है। जाट बहुल है, सबके सब यहाँ पर जाट जाट है, कुछ मोमडन भी है, पर ज्यादातर जाट हैं। ज्यादातर जाट है। आप यहाँ पर, क्योंकि अगर राजस्थान में देखा जाए तो जाट सबसे मतलब अगर 12 से 13% है, बहुल बहुत ज्यादा है। आप लोगों को लगता है कि जो जाट जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनको पूरा दर्जा मिला है जो मिलना चाहिए? यहाँ पर राजस्थान में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला जी? अब ये तो कोई राजनीति को पता नहीं क्या है, ये तो राजनीतिक द्वेषता है कि पहले भी जाट लीडर्स बहुमत में आए हैं, पर वो उन्होंने कहा आला कमान ने मना कर दिया, शेम नहीं मनाया। इस बार क्या जाटों की राजनीति कैसी रहती है? क्योंकि कहते हैं जाट तो यहाँ पर जाट ही जाट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जाट से जाट लड़ रहे हैं। पूरे राजस्थान में तो जाट लड़ नहीं सकते, और जाट ज्यादा आते हैं। जाट को सीएम आज तक, मुझे सन 52 का चुनाव याद आ रहा है, 52 उस टाइम में मेरी उम्र है 80 साल। आप 80 साल के? हाँ, 80 साल के। तो 52 के चुनाव से कोशिश कर रहे हैं कि जाट किसान सीएम बने, लेकिन आज तक तो बना नहीं। अब की बार देख रहे थे कि किसान बन जाए तो ठीक है कि जाट सीएम बने। हाँ, जाट सीएम क्यों चाहते हैं? जाट है, जाट और किसान एक ही है। पर क्यों चाहते हैं कि जाट और किसान सीएम बने? जाट हमेशा पहले भी गुलामी में रहे जी। हाँ, अब देखें थोड़ा स्वतंत्र हो जाए, जाटों का कुछ भला हो जाए। जब से आरक्षण मिला तो हमने बहुत खुशी बनाई कि जाटों को आरक्षण मिला। आरक्षण मिलने के बाद में नौकरियां भी खूब मिली हैं, राजनीति में भी खूब लाभ मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सीएम बन जाए तो मालूम नहीं कितना हमें लाभ में हो। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जाट सीएम का डिमांड पूरी करे? अब ये तो पार्टी तो हम कुछ के कहें, हमें तो जो सीएम बनाए वही पार्टी बढ़िया लगती है। और हम सीएम में ये वो चाहते हैं जो खेती का भला हो, एग्रीकल्चर का भला हो। खेती डूब गई काश्तकार की, बिल्कुल। किसान जमीन बेचने को तैयार हो रहे हैं, किसान बेचने को तैयार हो रहे हैं। जो किसानों का भला करे। हाँ, किसानों का भला। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे सरपंच है, प्रधान, प्रमुख, इनमें आरक्षण होने, वैसे सीएम का भी आरक्षण तो हो सकता है आरक्षण होना चाहिए। ये बात तो तय है कि जहाँ पर जाट जाता है वो सरकार बना देता है, क्योंकि यहाँ पर आप 12 से 13% हो। बनती है इसमें तो क्या दोबारा, बनती तो है। जिधर ज्यादा मुंह कर लेते हैं वो पार्टी निकल जाती है। क्या सोच के वोट करते हैं? वोट किस सोच में डालते हैं? हम तो यही सोच के डालते हैं कि जिस आदमी को देखते हैं कि ये हमारे पक्ष में आवाज उठाएगा, किसान के पक्ष में विधानसभा में ये आवाज उठाएगा, हमारे लिए कुछ वो मांग, हमारी जो मांगे हैं, डिमांडें हैं, वो जो भी है वो पूरी करने की कोशिश कराएगा विधानसभा में। सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग ये है कि किसान का भला हो, किसान को किसी भी तरह से लाभ मिले और उसकी आय में बढ़ोतरी हो। से छोड़ दे मोदेड़ा तेरे बस के कोनी रे, खुर से छोड़ दे खुर से पर मारा किसान ही बैठला। The women behind the veil, for the first time, heartening to see them vocal on their disappointments, their aspirations, and their most strident demands. आपके किसान की हालत बताऊं, आज की हालत है, मैं आज रोटी नहीं खाई हूँ, आपकी कसम झूठ बोल रही हूँ। तो किसान क्या रहता है, रोटी को नहीं खाई, नाई भी आप फोन करियो, कौन करियो मेरे को बायो को करियो, जब बोलिया आ रहे हैं, जब मैं ये जल्दी से ना हूँ जो नाई। आपकी समस्या बताऊं तो मेरा समस्या है कि दिवाली ने भी सिर नहीं नया काम के लागत मूल्य भी को नहीं मिला किसान ने, हालत ये की है। रोजगार है तो रोजगार को नहीं मिल रहा, डेली पेपर आउट हो रहे हैं, और लंपी रोग आयो भी सरकार की तरफ कोई मदद को नहीं करी, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे और कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हमारे रसीदपुरा में डेयरियां है बहुत ज्यादा, 287 गायें मर गई हमारे रसीदपुरा में, कोई मदद नहीं मिली। लंपी के उससे लंपी में। और सिलेंडर 400 रुपए में आता था, आज 1200 रुपए में आता है। ये जो गहलोत कह रहे हैं 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? वेरो नहीं, हमें तो मिलता नहीं है, किसको मिलता है?
नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। जिनके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, 2 बीघा भी जमीन है रहने के लिए, उसको सिलेंडर नहीं मिलता है। 1200 रुपए में मिलेगा उसको। तो ये सब नाम का है जो नाम 500 का है। सिलेंडर हाँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई की सरकार हो, मारो तो नाको पाबा नहीं रहे। किसान बीज लिया हो, बीज या बन जाए ना कहे ओ बीज उगसी घर को बीज उगे को नहीं, वो मंगवा जाए और पच वो उगे को नहीं। एक नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए संघर्ष करे। ऐसा नहीं कि वोट ले जाए। मोदी जी जैसे 2 करोड़ का वादा करके गए थे नौकरी का, मैं खुद आधे नंबर से रही हूँ। हर बार तो पेपर लीक कर देते हैं, और जो वैकेंसियां कहते हैं कि चुनाव के टाइम में इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी आएंगी, फिर वैकेंसियां करवाते नहीं है। आपने पेपर दिए हुए? बिल्कुल दिए। किसके दिए? मैंने रीट के भी दिए हैं, KVS के भी दिए हैं, और लाइब्रेरियन के भी दिए हैं। पेपर लीक हो गए? पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसियां होती नहीं है, आउट हो जाता है होने के बाद में। आप अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही है। और किसानी का काम भी कर रहे हैं, किसानी में भी कुछ नहीं बच रहा है। किसानी में भी कुछ नहीं बच रहा है। जैसे गाय पालन का काम करते हैं, पशुपालन का, तो लंपी में गाय मर गई। मतलब हमारे किसानों की हालत इतनी खराब है, उनके बच्चे तो वैसे नौकरी नहीं लग सकते। अग्निवीर जैसी योजनाएं, जो बच्चा किसान का बच्चा ये उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा फौज में जाएगा, अग्निवीर जैसी योजनाएं ला दी। उनमें न तो जो सैनिक शहीद होते हैं उनको सम्मान मिलता है, और 4 साल के नौकरी है, फिर 4 साल बाद में वो युवा क्या करेगा आके। अगर 3 मुद्दे आप मुझे बताओ, या एक मुद्दा बताओ जो सबसे बड़ा है आपके लिए, वो क्या होगा? हमारे लिए कोई सोचे, किसान के बारे में सोचे। किसान, यही आपके लिए सबसे बड़ा है। भाई देना ही पड़े वोट तो बचे हैं। ये अगर परिवार का भाई दे लो, इन दे दो, बिन दे दो, भाई पटे चर्चा हुआ भी साहब मारे पर ओ कर दे लो, ओ कर दे लो। 30 साल होगी कहाँ करा पड़ा, और मैं वोट भी दिए, सड़क की खातर ही दिए, पर हमारी सड़क हाल तक नहीं बनी है। बोलो इस सड़क में थे आया हो कोई, अत्ता पूरा ये एरिया का माया की सड़क ही के ना कोई सड़क है। बच्चों पेट में ने 5-4 महीना को तो वो मान लो लेडीज का तो ऑपरेशन दोबारा तो मन निकली जाए, अति खतरनाक है। अब मान लो कमर में दर्द है, तो कमर में दर्द कर दी डॉक्टर कर दी स्कूटी पर मोटरसाइकिल पर मत बैठो ना, क्या बैठे कोई क्या बैठा इतनी दूर जाना, कोई इनका जब छोड़ रहा इतनी दूर में छोड़ को आकर शिकर छोड़ जाऊँ, पर थाली डाली में कौन छोड़ रहा हूँ, थाली डाली में लेर कौन जाऊँ, हमारी हालत रोड नहीं है। चलिए बस एक आखिरी सवाल, आपको लगता है महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने कुछ किया है? जैसे उड़ान योजना है, थोड़ा बहुत किया है, पर पूरा बाकी बीजेपी की सरकार तो एकदम से फेल है। महिलाओं के मामले में एकदम से फेल है। तो आपको जो कम्युनिस्ट है यहाँ पर जो पार्टी है लाहौर में, उन पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, और कम्युनिस्टों के साथ है। अब की बार तो हमारे दूध में तो ऐसा माहौल है कि कम्युनिस्ट बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। सारे कम्युनिस्ट के साथ है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो कम्युनिस्ट काम करते हैं यहाँ पर फील्ड में रहकर लोगों के लिए, जैसे क्रॉप कटिंग करवाना, कर्ज माफी के लिए आंदोलन करना, और लंपी रोग में भी कम्युनिस्टों के कार्यकर्ता थे, वो हमारे घर घर आके गायों के लिए दवाई देना, मतलब बहुत अच्छा कार्य किया है। We take the same deadly dirt track which the women spoke of towards Sikar. But of course, we had the privilege of a car, not a two-wheeler. जो जनता के लिए महंगाई खत्म कर देगा, जो सिलेंडर और बिजली सस्ती करेगा, वही नेता है, और उसी को वोट देने से कोई मतलब है। बाकी तो देखो कोई मतलब है नहीं, हमें कोई देश से मतलब नहीं। देश को तो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो संभाल लेगा, लेकिन हमें तो इस महंगाई को मिटाना है। लाइन में लगे हम, भ्रष्टाचार की तकलीफ हमें हुई, क्या फायदा हुआ? मोदी जी ने अच्छा काम किया है, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और भी काम है बहुत। मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सरकार है ही नहीं राजस्थान में, मरी हुई सरकार है बिल्कुल। मेरे अंदाज से सब मरे हुए हैं। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर जहाँ तक पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि वोट देने जाते हैं जब तक इज्जत है। वोट दे के आगे वो रहेगा कि कटोरा अभी उनके हाथ में, फिर हमारे हाथ में देके छोड़ देंगे कि अब आप मांगते फिरते रहो, तो क्या फायदा उसमें? तो हमारा घर पे पड़ा है ना। Sikar district with its 8 seats. Last time, the BJP didn't even get one of the 8 here. We were here in 2018.
went to the most famous laddu shop all across Shekhawati, the favorite of former three-time Rajasthan Chief Minister and former Vice President of India, Bhairo Singh Shekhawat. इतनी पुरानी दुकान है? 120 वर्ष हो गए इनको किए हुए हमें। 120 वर्ष जी सिर्फ लड्डू बनते हैं? लड्डू बनते। और ये जो लड्डू है इनका पॉलिटिकल कनेक्ट क्या है जी? नहीं, ये तो व्यापारी कनेक्ट है। तो... नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। भैरो सिंह शेखावत का तो भैरो सिंह जी ने भी खूब खाए हैं, घनश्याम जी तिवारी ने भी खूब खाए हैं और खा रहे हैं। राजेंद्र जी पारिक हैं, उन्होंने भी खूब खा रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग खाते हैं। भैरो सिंह शेखावत के नाम से फिर जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत खाए हैं उन्होंने। वो पिताजी के दोस्त भी थे और बचपन से खा रहे हैं और अंतिम समय तक खाए उन्होंने। चलिए एक लड्डू तो खिला दीजिए। नहीं, एक ही दीजिएगा बस। बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम 5 साल पहले आए थे। बिल्कुल और मुझे याद है कि बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू थे तब। आपको 5 साल पहले भी आप लड्डू खाए गए थे, आज भी खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं नजर आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही बात है, यही बात है। यही स्वाद मिलेगा, यही टेस्ट मिलेगा। सरकारें आती जाएंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लड्डू नहीं बदलेगा। लड्डू नहीं बदलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। The Shekhawati region, known to have the hottest of days in summer and the coldest of nights in winter. Winter's approaching and the chill in the air is palpable, unmissable. But the heat of this election is making the top leadership of the BJP and the Congress sweat it out. Historically speaking, the BJP has an edge. Rajasthan is a swing state. No party has come back to power or has been re-elected by the people here in the last 3 decades. Well, we'll only know who wins when that last vote is counted. But for me, I'd like to watch out for the Sikar district and its 8 seats. Citadel of Congress. If the BJP dents it, that would mean, or the perception here is that the BJP is going to do well when it comes to building a road to Jaipur. You are watching India Today, powered by Finest. Be sustainable change, a BNP Group company. Carved from the heat and dust, he's seen India's blood and sweat. Nooh has been simmering with communal tension, shaped by a nation in motion, firsthand. This alliance hasn't still worked out how they intend over the next 10 months to work together. And that's why, when he hits the field to report India's politics and polls, you've always done what the Gandhis have wanted you to do. India's finest reporter and the ultimate newsman, Rajdeep Sardesai. Only on India Today TV. I'm wrapping up the trip feeling quite optimistic. Sam Altman is out as the CEO of OpenAI. He and OpenAI's wildly popular bot, ChatGPT, have become some of the most recognizable symbols of the generative AI craze over the past year. The company says the board lost confidence in Altman's ability to lead. It found he was, quote, not consistently candid in his communications, and says that hindered its work. The abrupt shuffle sent shockwaves across the tech industry and came as a surprise for many employees. ChatGPT came out last November, backed by billions of dollars from Microsoft. It quickly became one of the world's fastest growing applications. It can spit out human-like content by training on heaps of data. The company says OpenAI's chief technology officer, Mira Murati, will serve as interim boss while it searches for a permanent CEO. On social media, Altman said he loved his time at OpenAI and hoped it was transformative for the world.
are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company. वीरेंद्र का पूरा परिवार हमारे साथ है, जो इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और जो तस्वीरें सुबह सुबह आई हैं आप लोगों ने देखी है? हाँ, हम लोग देखे हैं, लेकिन उसमें वीरेंद्र का ऐसा तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आया। इसीलिए हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है। इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। और अभी उस सबसे बात नहीं हो पाई है। अगर उस सबसे बात हो जाती है तो ये तस्वीर पूरा स्पष्ट हो जाएगी कि भाई हम लोग बहुत ठीक है और सब चीज हम लोग को मिलने लगा। खाना पीना भी जो 6 इंच का पाइप जो गया है उससे वो लोग को जो राहत वाला चीज सामग्री मिल रही है वही बात हो जाएगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग के पास पूरा तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि भाई सब चीज ठीक ठाक है। अब जो निकालने का जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें जल्द से जल्द किया जाएगा और हम लोग को बाहर निकालने के बाद फिर ठीक हो जाएगा सब। आप यहीं थे या फिर जब ये एक्सीडेंट हुआ आपके भाई अंदर फंस गए तब वहां से आए? ये मतलब 5 दिन के बाद से आया, एक्सीडेंट होने के बाद मैं आया हूँ। दिवाली में आनंद फानंद छोड़ करके सब कुछ। तो उस दिन से ही तो हम लोग परेशान हैं कि उस दिन के बाद ही, उसी दिन जब ये घटना घटी तो इसके बाद कहाँ अब इसके हाँ सब कुछ खत्म हो गया। अब जब निकलेंगे इसके बाद ही सब दिवाली छठ होगा, उसके पहले तो कोई चीज का ही नहीं है। जब नितिन गडकरी खुद आए थे केंद्रीय मंत्री तो उन लोगों से आपको क्या आश्वासन मिला था वहां से? वही आश्वासन तो यही दिए थे, देखो मैं सब चीज कर रहा हूँ, टोटल चीज मैं यहाँ के लिए टोटल मशीनरी टोटल व्यवस्था कर रहा हूँ और जितने भी अफसर है सबको मैं लगा दिया हूँ कि अब देखिए कि कब तक होता है। तो हम लोग ने उससे टाइम मांगा था कि सर देखिए कितना मतलब एक तरह से उम्मीद और हम लोग का तो धैर्य खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है तो कैसे होगा। तो वही बोले कि एक काम कीजिए, धैर्य रखिए और मैं यही बता सकता हूँ। तो मैं बोला सर कम से कम आप टाइम दे दीजिए, टाइम कितना टाइम तक हो सकता है। तो नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि 2.5 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा और हो जाएगा और शायद ये चीज सामने नजर आ रहा है। You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company. Co-powered by PolicyBazaar.com. हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। Big guns booming. Battle lines drawn. Another political storm brews in the desert state. Would you be able to turn the hand of history because it gives BJP a natural edge? That's true. It's not a natural edge. It's just historically, last 3 decades, Rajasthan has seen a revolving door policy where we have 5 years of Congress and 5 years of BJP. But I think this time people are weighing both the parties. They're looking at the performance, looking at the national politics, 10 years of BJP government in Delhi, the economic issues, unemployment issues. And I think we've got a lot of tailwind coming in from victories in Karnataka and Himachal Pradesh. And I think all the 4 states that go to poll here, including the one in Northeast, the Congress party will be able to form governments. You know, your voice is going, I get that. So apologies, not a problem. Apologies because we're making you speak and you have a lot of sabhas which are lined up. But having said that, what are your issues that you're going to the people with? Is it your 7 guarantees that you're talking of? And do you think they're going to catch? I think it's multiple issues. So when we formed the government, we had a manifesto. And I can tell you that in 2018, when we went to the people, we had an agenda for Rajasthan, a blueprint, a roadmap. And I'm happy to say that we've been able to implement most of the promises we made. And now going forward, we have a commitment that people have faith in.
unlike the BJP that was missing in Rajasthan. You see, for 5 years in Rajasthan, it was the opposition that was missing in action. We didn't see an opposition that was effective in a sense, or it was able to become the voice of the people. So I think people are weighing both the parties. It's a bipolar contest. It's always a two-party election. So I think people are now willing to take that leap of faith and vote for the Congress one more time. You know, the manifesto of the Bharatiya Janata Party mirrors what you have offered. If you've offered a 500 rupee cylinder, they're offering a 450 cylinder. You know, in terms of free bijli, you know, they're offering more than what you're offering. You see now, what stopped the BJP from giving this? In fact, what stopped the BJP from making the gas cylinder not 1100 rupees? It reached, you know, the highest point ever. So price rise, inflation really have been going through the roof. Unemployment is a big issue, and to my mind, all these things are not going to gel with the people, because they've had 10 full years to implement this at the national level. They've had governments in other states. It's only because we are doing some things, they're trying to project the same sort of ideas, but they're not getting any traction amongst the voters. That's my sense. Will history stand by BJP's side? Has time come for return of the Saffron Party? The fact that we are winning, and we're winning hands down in the entire state, it also gives us a great amount of confidence. A government that works in sync with the central government is extremely important. So when Prime Minister wants this country to move ahead, and he sends, for example, funds for Jal Jeevan Mission to Rajasthan, and he sends 29,000 crores to Rajasthan, and it doesn't get utilized. Only 8,000 crore gets used. And even in that, there's massive amount of corruption. Water has not reached these places. Prime Minister had given a deadline of 2024, but the water has not reached. So therefore, it is equally important for the Prime Minister, if people have to give strength to the Prime Minister. You know, you've been charged by the incumbent government of them setting the narrative and you following it up in terms of your manifesto seems or reads like, as per them, a copy of the Congress schemes. You know, if they're offering 500 for cylinder, you're offering 450. You know, if you're offering X amount of money to the women, you know, they're offering more. So they're saying it's a copy of that, one. The other charge that you're being leveled with is you're running a campaign of polarization while they are talking about development. If you give, let's say, PM Kisan Samman Nidhi, the 6,000 rupees that goes to the farmers, immediately after you come into power, right? That is different than you offering them money 2 months before the election. If you give them free gas cylinders and free gas immediately after you come into power, it is different than giving them after registration. So interestingly, people must hear this. The Congress government 2 months before the election says, we will provide you 100 units of free electricity. And 2,000 for farmers. 2,000 units for farmers. 2,000 units for farmers, 100 units of free electricity if you register with us. Very nice, fantastic. Are people not registered? Every bill is as per mobile phone. A war of manifestos. अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। इन्होंने न आकाश छोड़ा, न नील धरती पानी छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, तीनों लोग को लूट करके रखा। ये कांग्रेस का इतिहास। The battle for Rajasthan. Top focus on to the point. Cutting across to my colleague Dev Ankur, who's joining us for the very latest from Jaipur on the Congress releasing its manifesto. Dev, if you have to compare, there are possible mirror images other than the caste census. Well, it is quite apparent, Preeti, that the Congress feels that to counter the BJP, they have to hit out at the Prime Minister. They feel that the offensive that the BJP went on to that has to be countered step by step. They feel that the remarks, that the aspersions that have been cast by Prime Minister Narendra Modi, mentioning that Mallikarjun Kharge had abused his father, the fact that he mentioned that
trying to say that Rahul Gandhi is Murko ka Sardar. So that is how the Congress feels it can counter Prime Minister Narendra Modi. Even today, the narrative that the Congress tried to set was that Prime Minister Narendra Modi says something else and he does something completely else. So quite clearly, Preeti, despite the fact that the BJP could have taken up the issues, and several of them are there, from paper leak to unemployment to inflation or price rise, the BJP out here in Rajasthan is trying to indulge in rhetorical statements, and it is quite apparent that in this last leg, the BJP feels that through this roadshow that Prime Minister Narendra Modi took out today and earlier in Bikaner, this is the last mile that the BJP needs to really push and give that momentum to the party, which can perhaps, it feels, can take the BJP to a different level and widen the gap between the Congress and the Saffron Party. Well, you're right there, Dave, especially, where the manifestos might sound similar, but the kind of language of polarity between the BJP and the Congress cannot be missed. If the Prime Minister has directly attacked the Gandhis this time, the Congress leaders did not save themselves. You had Mr. Kharge even invoke the caste of the Prime Minister, or Rahul Gandhi, who during an election rally this time actually called the Prime Minister Panotti. Let's now take it to our other guest this evening, Avinash Kalla, senior journalist with us, Rajdeep Sardesai, consulting editor. Rajdeep, first question. What, according to you, will be the biggest poll factor in Rajasthan after your travels? Well, Preeti, for me, the biggest factor in Rajasthan this time is what I call freebies versus local anti-incumbency. Now, you are seeing the slew of promises that are being made by both the Gehlot government as well as by the opposition BJP, almost mirroring each other. Now, some of those promises that Mr. Gehlot has put in place, like free mobiles, you could call freebies. On the other hand, his Chiranjeevi scheme of health insurance, you could claim is genuinely welfareist. So you have Mr. Gehlot trying to offset local anti-incumbency against his MLAs, many of whom are seen to have aggrandized themselves over the last 5 years. Their assets have been built up, and questions whether they've done enough for their constituents. So to offset that local anti-incumbency, and of course Rajasthan's famous 5-year itch where governments change every 5 years, you've got a slew of promises of a kind perhaps that we haven't seen in certainly not in Rajasthan, for women, for youth, for Dalits, for every group. Promises are being made, some of which are freebies, some are welfareist measures, and therefore I think this election is about, is that enough to woo the disenchanted and fatigued voters who perhaps are angry with their local MLAs? I think that is the nature of this context, if I were to put it in very simple words again. Freebie politics versus local anti-incumbency. All right, okay. And I want to bring in Rajesh Kalla. Rajesh Kalla, and also what Rajdeep says, add in the fact of polarization. The Muslim population might not be too much, Avinash Kalla, where, Rajasthan is concerned, but polarization to the hilt. Everywhere you go, cutting across region, you heard Sanatan Dharm, you heard Kanhaiya Lal, especially from the Bharatiya Janata Party. Yeah, Kanhaiya Lal is a staple of all the speeches, and having matched the Congress with welfare schemes, one for the other, BJP is now trying to address the core Hindutva vote bank of its own. And if it could get all those people together, they think they have a chance, because there aren't any new schemes or different schemes that they have. So their only differentiating factor here becomes Hindutva and the core vote bank, and for which both the BJP and its allied factions like the RSS and other units are all focusing on. Look at today's yatra that the route Prime Minister has taken. This crosses through the 3 constituencies of Jaipur, which are all polarizing constituencies, or there is a contest between a Muslim candidate and a Hindu candidate. That's the sort of the constituency that it is. Hawa Mahal, it has got close to 50% of minority votes. Then you have Kishanpol, which again has a sizable minority. Then you have Adarsh Nagar, another Muslim-dominated constituency, where Hindus are also in equal number. And the differentiating factor between them is not too much. If I take a case in point, if you look at Hawa Mahal, there are close to 110,000 minority voters, and the other voters, which are Hindu voters, would be somewhere around 140,000. So it's quite close. So the BJP is trying to garner as many votes as it could and consolidate the core Hindutva vote bank so that it could then match the Congress with its own welfare schemes.
So that is how the BJP wants to take the election further. And similarly, as I mentioned yesterday also in Rajdeep's show, the thing is that now in a tourism-dominated state of Rajasthan, the BJP is taking Ayodhya tourism to the next level. Everywhere where its leaders are going, they're promising that if you get a BJP candidate elected, the candidate will take you to Ayodhya, and there we will manage everything after the 22nd of January. So that is another thing that they are pushing very hard. Ram Mandir and Ram Lala is also a big issue for the BJP in this election. Avinash, what I found, and I'll bring in Rajdeep on it, at least on my travels, suddenly in the final leg of the campaign, the bulldozer has come in as the chief guest in most sabhas. Yes. In the matter of 3 days, I came across 11 or 12 sabhas where you had the bulldozer as, the backdrop of the sabha. So interesting in that context, because of course it has a law and order angle. It also has a polarizing angle as well. But Rajdeep, if you have to encapsulate your travel through Rajasthan on what would be the biggest poll points per se, what would they be? You know what, Preeti, struck me on my travels through Rajasthan is the reinvention of Ashok Gehlot. Now here is someone who, through much of his 50 years in public life, was the backroom political operator, not seen as this charismatic leader or a personality cult around him. Instead, what are we finding? Everywhere you go in Rajasthan, Gehlot is being pitched as a larger-than-life figure. So the election becomes about Ashok Gehlot. Are you with him or not with him? If this was a chief ministerial contest, I might even suggest that the popularity of Mr. Gehlot, because of these welfare schemes, might have actually won the Congress an election. So if it was presidential, he'd have an advantage. But the fact is that he, in a way, has not been his own man over the last 5 years. The conflict with Sachin Pilot, the compromises that have been made to retain your MLAs and keep your government together could cost him the election. And perhaps that's something that struck me. It's not as if the BJP has done something dramatic in Rajasthan to push Mr. Gehlot on the mat. But the fact that he spent much of the last 5 years basically in damage control, crisis management, trying to ensure that his government wasn't toppled, dealing with COVID, dealing with the war with Sachin Pilot, all of that has meant that I think governance suffered for the first 3.5 to 4 years. Has he done enough in the last 1 year to be back in the race? Well, I sense that he's down but not out. But net, it will take a fair amount for Ashok Gehlot to reverse Rajasthan's 5-year itch. Well, many would suggest that. And Avinash, I want to bring you in on that with what Rajdeep was also suggesting. But there's something that even I saw. You see the BJP ahead, but you don't see anti-incumbency against Gehlot. He's still seemingly popular. So at one angle, you say, okay, BJP is going, history is going to stand by BJP. But then you look at, can Gehlot turn the tide? Preeti, elections predominantly have been on local factions and local leaders. Even if you look at constituencies, most of the people who are elected once, even if they get out of the position next year, in the coming election, they come back again. And now we are talking about, can Mr. Gehlot pull this thing out that, he gets the Congress back into power? If you look at election data, in the last 3 elections, there have been 53 seats that the Congress has not won. And in that, they have come into power twice. So there are seats which they have not won. So take out of 199, 53 out. They are left with close to 140 seats. And in a election which is a pendulum state, to get 100 plus seats out of 140 seats, which are your playing area, you don't stand that great a chance. So that is a very difficult thing. And usually people vote on the local MLA. That has been the case so far. Will Mr. Gehlot be able to change it? His campaign has been brilliant. It's, I think, for the first time that the Congress is setting the agenda and the BJP is responding to any agenda. So on that account, the Congress has done a good job. But will it translate into votes on the 25th remains to be seen. Well, we'll only know then because, Avinash Kala, the BJP still seems to be ahead. And what they're also seeming to do is a bit of recalibration. And, correct me if I'm wrong. What I also saw in the final dying hours of this campaign is, Avinash Kala, maybe the return of Vasundhara Raje on the posters
that have been plastered across the state. She wasn't there earlier. Modi was on the ticket. But suddenly I've seen a lot of posters where you have the Prime Minister in the middle, Mr. Nadda on the side, and next to him, the Prime Minister on the other side is not CP Joshi but Vasundhara Raje. Yes. Preeti, if I can say, a few hours from now, just a few hours earlier, the BJP finally got its Kodak moment when Vasundhara Raje and the Prime Minister were clicked in Anta, a district in Jhalawad Bara area, a place in Jhalawad Bara. And it was only Vasundhara Raje and the Prime Minister who were the big leaders on the stage. They were sitting next to each other. They were talking. And for the first time in the presence of Prime Minister, Vasundhara Raje made a speech. And she ended the speech with a chant of Modi, Modi. So that last cog in the wheel was put into the place. And now BJP has got its act together. They got their Kodak moment. There were many speculations that what will happen to Vasundhara Raje. Will she and Prime Minister come together or whatnot? So the BJP guys got their picture right. And after Vasundhara's speech, the Prime Minister took the name of Dushyant Singh. So that has been put in place. Gradually, you see the BJP coming all together just 3 days prior to that. And one more thing, Preeti, if I could say, there was a Vasundhara Raje loyalist, Bhavani Singh Rajawat, in the Kota Hadoti area, who was contesting as an independent. He did not pull out of the election, did not take his nomination back, but today did a press conference and said, I will support the BJP candidate from my constituency. Well, you're right there. You're so right things there. are coming in. Well, things are coming in, and Vasundhara Raje seeming to, without giving a single interview, viewers, very unlike Vasundhara Raje. She's very vocal, goes through across sabhas, hasn't spoken to the press at all, but seemed to be managing things at the back. Well, has found her way back to the posters where Rajasthan is concerned, adding to it what Mr. Kala said. Appreciate both you gentlemen for joining us. We're going to get you back tomorrow evening as well as we break down what's going on in the state of Rajasthan. And for the rest, you can tune in to my Ground Report's Election Dispatch. As the narrative of democracy comes full circle in the state of Rajasthan, where the people become the powerful and the powerful at the will of the people. Will history repeat itself, or will the people of the state script a new chapter? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एमएलए का चुनाव ये ज्यादा भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, पर आपके यहाँ पे ना रोड है ना कुछ है। Presented by आपका जॉय भारत का जॉय जॉय ई-बाइक। You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company. Joining me on the red carpet of the International Emmy Awards is Vedas and Shefali Shah. Welcome to India Today once again. Thank you. Thank you. I feel like I've been here before. I mean the Emmys, not India Today. So yeah. This is a big day for all of us. To begin with, what are you guys wearing? What designer? And please tell me something about your outfits. So the day I knew I was nominated, I knew I was going to wear this color. I knew I was going to wear a sari, which was made by Indian artisans and a designer. And I knew I wanted this color with a little bit of gold. And it's worked really well for me for my national award. So yes, and the sari is by Torani, and I have to give it to them. They've made it in less than 10 days, the entire hand weave, and of course the artisans, and the jewelry is by Sri Paramani. I'm wearing my feelings. My feelings are in a zigzag pattern. My jewelry, both my ears were made by my parents. My mom made this ear and my dad made that ear. My stylist Shifa put this together, so this is what I'm wearing right now. Veer being Veer on the red carpet today. We need to do a quick pocket check. Are you carrying Indian soil today? I'm not carrying Indian soil. I'm carrying my my Emmy pass and many drugs. No, I'm joking. I'm not. No, not at all. All right.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a B&P Group company. I see the support you have here in Kamareddy. Are you confident of a win? Yeah, definitely. By how many votes, sir? Congress workers are going to win Kamareddy constituency. By how many votes will you win against KCR? 45,000 majority. The advantage of KCR is this is his hometown, native, ancestral village. What's your advantage, sir? He had cheated last 10 years with these people. So now they wanted to take revenge against KCR. So they are going to defeat KCR. You have been campaigning across Telangana. Why did you choose Kamareddy? Is it only because of KCR? So my high command suggestion, my high command told me that to contest from Kamareddy to defeat KCR. So high command has given suggestion and high command given orders to contest from Kamareddy. That is why I am contesting from Kamareddy. Are you campaigning a lot more in Kamareddy than other constituencies? It is equal to 119 constituencies I have to win. I am president of the Congress. So every constituency is equal to me. Among one of the constituencies, Kamareddy. So I have my priorities equal. So I am going to tour entire Telangana. Are you underestimating Mr. KCR in Kamareddy? So you are underestimating Kamareddy youth and women. They have defeated long back Srimati Indiraji. They have defeated NTR in Telangana. So this is the great situation in India. So people, if they decided to defeat anyone, they can defeat. So this election, KCR is going to lose this election. I feel like a जयपुर महाराजा. आप तो मेरे बॉडीगार्ड बन गए हैं. टाइगर जिंदा है. Nothing like an early morning walk to get the energy going. Chief Minister कौन बनेगा आगे? 50-50 अभी. 50-50 तो मैंने बिस्किट सुने हैं. Morning walk done. Time for some Rajasthani breakfast at Tapri. Saffron chai. बीजेपी एकदम बिखरी हुई है. मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूँ. ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है. Enjoy देसी घी बाजरे की रोटी. पे भी लड़ा जाएगा और विकास पे भी लड़ा जाएगा. You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a B&P Group company. Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies. Co-presented by Century Laminates by Manish Malhotra, Fashion for your furniture. Co-presented by Macho Hind, बड़े आराम से. Co-powered by PolicyBazaar.com, हर family होगी insured.